How's everyone? Alhamdulillah, all good. Alhamdulillah. Hope the same with you. Yes, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. Okay, let's begin today's class now. Okay, we stopped at the death of Zainab bint Muhammad radiallahu anha. Today we are talking about her daughter, Umama bint Abi Alas. Okay, Umama was the older of the two children of Abu Alas and Zainab, and she was privileged to have been raised by some of the best human beings in the history of mankind. And imagine parents being Zainab and Abu Alas and grandparents, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And you can imagine, like, if you're living under his shade, how pleasant and how wonderful that would be. So Umama was one of the privileged kids to have been one of the beloveds of the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and she got the kind of tarbiyah and care and concern of such wonderful human beings. Abu Qatada has reported that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sometimes led the prayers while Umama rode on his shoulders. We have seen a similar scene in regards to Imam Hassan Hussein radiallahu anhuma, that they used to play when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam used to pray. And a similar situation, like he was such a loving grandfather. When he bowed down or prostrated, he would seat her on the floor and pick her up again after he had completed prostrations. Once Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam received a necklace of carnelian as a gift. He said he would give it to the member of his family whom he loved most. Now imagine, एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गिफ्ट मिला नेकलेस, and again a precious stone, the carnelian as a gift. तो he said कि मैं जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ फैमिली में उसको गिफ्ट करूँगा. तो वहाँ पर जो औरतें मौजूद थी उस दौरान, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदियल्लाहु अन्हा को देंगे. But what he did, he called Umama and he adorned her with the necklace. So this proves her love for Umama. And as it is grandchildren के साथ grandparents का एक additional और बहुत extraordinary love होता है. Similarly, the negus of Ibn Sina sent Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a ring with a precious stone. दोबारा से फिर जो नेगस था जो इब्न सीनिया का किंग, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रिंग गिफ्ट की थी प्रेशियस स्टोन के साथ. Then again what Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did, he called Umama and he adorned her with the ring. Umama received much love and attention from her grandfather. She bore the loss of her mother in 8 after Hijri and her father died in 12 after Hijri. Before he died, Abu al-As willed Zubair ibn Awam, his close relative, to be Umama's guardian following his death. यानी उस वक्त में ऐसा होता था कि अगर कोई ऑर्फन हो जाता था तो उसकी वकालत या उसकी स्पॉन्सरशिप जो है वो किसी एक रिलायबल क्लोज रिलेटिव को दी जाती थी. तो व्हेन हर पेरेंट्स आल्सो पास्ड अवे, उनकी कफालत किसको मिल गई? उन्होंने जुबैर इब्न अव्वाम को दे दिया. तो ही वाज द गार्डियन फॉर Umama bint Abi Alas. Who was Umama married to? Soon after the death of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatima radiallahu anha also died. According to some reports, she had encouraged her husband Ali ibn Abi Talib to marry Umama after her death. Thus, Umama was married to Ali radiallahu anhu. I'm sure काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ बात बतानी होगी. It was something new for me also. तो जब हज़रत फातिमा रदियल्लाहु anha passed away, before her death, she had already kind of encouraged her husband to remarry and get married to Umama. Umama and Ali enjoyed a very healthy relationship. They were blessed with a son named Muhammad, who later came to be known as Muhammad al-Awsat, Muhammad the Medial. इन दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी marital relationship थी, and they had a son named Muhammad. Some historians have suggested that Umama did not have any offspring. अब again यहाँ पर mixed opinion है. कुछ कहते हैं कि इनकी कोई औलाद नहीं थी और कुछ कहते हैं कि इनका ये बेटा था मोहम्मद अल-अवसत. अल्लाहु आलम. Following the assassination of Ali ibn Abi Talib, Umama married Mughira ibn Nawfal. जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम का और एक कल्चर था कि they never used to keep a woman as a widow for a long time. उनकी कोशिश ये होती थी कि जल्द से जल्द उसको दोबारा से शादी करके सेटल डाउन किया जाए, which is a very good thing. Quite uncommon these days in some communities, but Islamically that's the solution.
So even when Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu died, उनकी शादी फिर किससे करा दी गई? मुगीरा ibn Nawfal. With Mughira, Umama had another son named Yahya, and she became to known as Yahya. Umama, may God be pleased with her, died while she was married to Mughira. And when she was still married, she died, and she had a son with Mughira, and his name was Yahya. And that is the reason she got the title of Yahya. Now we will come to another child of Zainab radiallahu anha, who was Ali ibn Abi Alas. Ali was the son of Zainab bin Abu Alas and younger brother of Umama. So Umama is the elder sister and unka younger sibling is Ali. He was the grandson of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Khadija radiallahu anha. Hala bin Khuwailid was his paternal grandmother. He was nursed by a woman from the tribe of Banu Qadira. Like Umama, Ali has also received much love from his grandfather Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani Umama ki tarah hi, Ali was quite lucky to be loved immensely by his grandfather, who was none other than our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Once Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam visited Zainab, he hugged little Ali and said he had a greater right to Ali than anyone else related to the child. एक बार जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैनब को विजिट किए तो उन्होंने अली लिटिल अली को उठाकर हक किया, उसे गले लगा दिया, फिर उसे कहा कि ही हैड अ ग्रेटर राइट, उनका हक अली पे सबसे ज्यादा है related anyone else related to the child, यानी किसी और का रिलेशन में इतना हक नहीं है जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली के ऊपर है. He reportedly said, when a Muslim and a non-Muslim shared something, the Muslim has a greater right to it. This may be viewed in relation to the fact that Abu al-As had not embraced Islam yet. यानी आपको पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, how and when Abu al-As became Muslim. But since उनके डैड ने शहादा नहीं लिया था, which means eventually the kids also were not Muslim at that time, but still now Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has a relation, of course, blood relation है उनका, तो but he passed a comment there which he said that when a Muslim and a non-Muslim share anything, the Muslim has a greater right to it. मुस्लिम का ज्यादा ग्रेटर राइट होता है अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कोई चीज शेयर करते हैं तो इसमें अभी ये था, ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा वाज मुस्लिम, अबू अलास वाज नॉन मुस्लिम. लेकिन जब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कुछ शेयर करते हैं तो उसमें मुस्लिम का ज्यादा शेयर होता है, यानी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा का शेयर ज्यादा था, एंड देन इवेंचुअली दैट इज द रीजन व्हिच ही पास्ड अ कमेंट दैट उनका हक सबसे ज्यादा है. It is reported that Ali was riding along with Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam the day Makkah was conquered. He was still a youth when he died during the lifetime of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. यानी जिस वक्त मक्का फतेह हुआ था उस वक्त अली उनके साथ राइड कर रहे थे और वो अपनी जवानी में थे, यूथ में थे when he died during the lifetime of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coming to another daughter now, Ruqayya bint Muhammad radiyallahu anha. Ruqayya was born in Makkah 3 years after Zainab was born and 7 years before Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was appointed Nabi. Yes, Jumana, go ahead. Assalamualaikum. Again, I heard the same thing that Abu al-As was not a Muslim and she was a Muslim. Probably ऐसा हो सकता है, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने जो बताया वो ऐसा हो सकता है that a Muslim has more right over a non-Muslim. यानी अगर उनके जो यानी father of Abu al-As was a non-Muslim and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a grandfather also a Muslim, so he has more right over the children than the other one. ऐसा हो सकता है, right? दोनों But then दोनों you said the same thing दोनों that Abu al-As was not a Muslim. दोनों एंगल से होता है, बिकॉज ये पूरा जो मैटरनल साइड है वो मुस्लिम है, पैटर्नल साइड वो नॉन मुस्लिम है, तो द एंटायर मैटरनल साइड हैज मोर राइट देन द पैटर्नल साइड. Maternal side. Okay. तो वो पूरी सेंस में आप अभी उसको पूरी लाइनेज को आप करेक्ट कर ले तो यस, द मदर विल हैव मोर राइट्स, ग्रैंडफादर नाना विल हैव मोर राइट देन दादा. तो वो पूरी बिकॉज अभी बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के कंपैरिजन चल रहा है तो मुस्लिम का ज्यादा हक बन गया. जी, ओके ओके, जज़ाकल्लाह. वही. Okay. Coming back to Ruqayya, she was 3 years younger to Zainab radiallahu anha.
And it was when she was born, it was 7 years before Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was appointed as Nabi. Adjacent to the residence of Khadija radiallahu anha and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Abu Lahab's house. His actual name was Abdul Uzza. Before Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam claimed Nabuwa, Abu Lahab loved his nephew very much. इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं. Like he was the immediate neighbor until Nabuwa was declared. जब तक के prophethood declare नहीं हुई थी, रिसाला declare नहीं हुई थी, तब तक के he, because उनके चाचा थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे. But the moment Nabuwa declared होगी, and when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam started his mission, he became one of the sworn enemies. He was very handsome and healthy. His sons were Utbah and Utaiba. One day, some elders of Banu Hashim took Abu Talib to visit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They referred to Zainab's marriage to Abu al-As on the maternal side. They admitted Abu al-As was a gentleman, but emphasized that the paternal side no less in nobility. One second, huh? Excuse me. Hello. Yeah, sorry. Okay. So his two sons, Utbah and Utaiba, were there. Some elders of Banu Hashim took Abu Talib to visit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They referred to Zainab's marriage to Abu al-As on the maternal side. यानी उनकी खाला के बेटे के साथ हुई थी, तो वो उनके mom के side का रिश्ता था. And they agreed that Abu al-As was a gentleman, but emphasized that the paternal side no less in nobility than the maternal family of the children. So they also have the right to make proposals. Yani, honestly, he wanted to propose his two sons for daughters of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, और वो दलीलें ये दे रहे थे कि अब ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा की अपनी मॉम की तरफ शादी एक हो गई थी, मैके की तरफ रिश्ता उनका हो गया था, तो they were saying that even the paternal side has a right to propose. So Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inquired कि उनका proposal क्या है, and then they replied that their two daughters, Ruqayya and Kulsum, to be married to the paternal side, यानी उनके चचा में, चचा के बेटों के साथ शादी हो जाए. So specifically, Abu Lahab proposed to marry his sons Utbah and Utaiba to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's daughters. In response, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said he valued his relationship with Abu Lahab and other members of the extended family, but he needed time to think about the proposals. He consulted Khadija radiallahu anha on this matter. Now just imagine what a beautiful, again, a point to ponder. Okay, he is the man of authority, but again the kind of importance he gives to his wife, it is a lesson for our husbands actually, कि वो सलाह मशवरा अपनी बेगम से करेंगे और फिर उसके बाद he will arrive at a conclusion. हालांकि देखा जाए तो at that juncture even his sons and his family and his nobility and his closeness with the Muhammad sallallahu alaihi wasallam के हिसाब से there is no flaw or there is no reason for rejection, but yet the way he gives importance to his wife and in consultation with her, yani these are the things that shows us कि what is a happy marriage all about. ये base और foundation होती है. It's not just love and responsibilities, it's more of a respect to actually take the relation to a next level. So he consulted Khadija radiallahu anha. She was hesitant to accept the proposal because she knew Jamil, the wife of Abu Lahab, who was going to be the mother-in-law of Ruqayya and Kulsum. If the proposal was accepted, Jamil, whose actual name was Arwa, was the sister of Abu Sufyan and the daughter of Harb ibn Umayyah. She was known to be foul-tongued, ill-tempered, and mischievous. Now, points to be noted again. हमें कोशिश ये करनी है, ये हम लोग अपनी अपनी इस्लाह करेंगे, अपने अपने बारे में सोचेंगे. We will not pinpoint fingers at others at all at this juncture. But just imagine, जब Muhammad sallallahu alaihi wasallam consulted Khadija radiallahu anha in regards to the proposal of Abu Lahab's sons, she said things are okay, except she was worried about one point. She was thinking of Arwa, who's Jamil. This lady, she is foul-tongued, ill-tempered, and mischievous. यानी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इस तरीके के जिनकी ज़बान ख़राब होती है, जो बहुत इल टेम्पर्ड होते हैं, जो बहुत टॉन्ट्स वगैरह करते हैं, एंड यानी उनकी जो नेचर या जो कैरेक्टर है, उनकी ज़बान की वजह से सारा कुछ उनकी अच्छाई जो है वो ढक जाती है. एंड स्पेशली जब हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि हम रिश्ता वहाँ पे करने जा रहे हैं, अपनी औलाद, अपनी बेटी
हमारी प्रेशियस डॉटर, हमारी प्रिंसेस को उनके घर पे हम देने जा रहे हैं, तो वी लुक फॉर समथिंग वेरी कंफर्टेबल एंड प्लीजिंग. एंड अब जब अरवा जमील के बारे में ये ऑलरेडी फेमस था कि व्हाट काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट शी होल्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ अ फाउल लैंग्वेज शी यूजेस, तो उस वजह से वो थोड़ी सी परेशान हुई. वी हैव टू मेक श्योर, एज आई सेड, कि हम लोग हर चीज से लेसन्स लेंगे अपने लिए, कि हम अपनी टंग को, जो 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे बताएं, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल अवर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम दिस इल क्वालिटीज, फाउल टंग्ड, इल टेम्पर्ड एंड बीइंग मिस्चीवियस. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. एंड ये सब जो शैतानी शर है, इससे हमें महफूज रखें यारा. ऐसे लोग जो पोजेस करते हैं कैरेक्टर्स, उनके शर से भी हमको महफूज करे. एंड ही शुड नॉट मेक अस वन ऑफ दोस यारा. आमीन. So she was the one named Hamalat al-Hatab, the carrier of the firewood in Surah Al-Hab in Quran. Khadija radiallahu anha was concerned, you know about Surah Masad, uski line ka, she is the one who's the carrier of the firewood. So these are the qualities. And of course, जो नबी पे जुल्म उन्होंने किए थे और जो हरकतें उन्होंने की थी, उसकी plus, यानी look at her, her character was such कि she actually did not do anything to please Allah Azza wa Jal. तो ये सारी उनकी इंट्रिंसिक पर्सनालिटी भी थी. और बाद में उन्होंने जो प्रिटेंड किया, जैसे ही प्रॉफिट हु डिक्लेयर हुआ, एंड द वे दे स्टार्टेड इल ट्रीटिंग, तो वो सारा कुछ जैसे सम अप हो गया. And on the other hand, we have seen the people of Jannah, the people of paradise of good husn khuluq, their language, their character, their mannerism, their adab, वो पहले से आखिर तक subhanallah flawless रहा है. So you can link the dots, yani. So Khadija radiallahu anha was concerned about how her daughters would fare with the notorious woman. यानी कैसे वो ऐसी औरत के साथ अपनी लाइफ गुजारेंगी. Known to Makkan for her rudeness. Yani she was famous in the entire Makkan for her rudeness. May Allah protect us from being rude. But considering that their first daughter had been married on the maternal side of the family, Muhammad ﷺ and Khadija radiallahu anha agreed to marry Ruqayya to Utbah and Kulsum to Utayba. Now again, something for us. Yani, yes, in spite of knowing all this, but when they gauge the situation, okay, they have to do adal, they have to be fair in their dealings, in their relationships. कहते हैं एक रिश्ता अपने मैके में हो गया है, तो बाकी का सामने से प्रपोजल्स आए हैं, तो they have to honor it, और उसको फिर बैलेंस करने के लिए ससुराल में करना पड़ा. But again, they did not, yani this thing didn't make her cut the relationship या reject the proposal. This is called reliance on Allah, tawakkal Allah. आगे अल्लाह ताला ने क्या खैर किया, we know about it. But at this juncture, she did show wisdom. Alhamdulillah. However, their marriages were not immediately consummated, and the two girls lived with their parents even at the time when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam announced Nubuwa. So we know very well कि जब यंग, बहुत छोटी लड़कियों की, इवन बिफोर रीचिंग द प्यूबर्टी, अगर उनकी शादी फिक्स हो जाती थी तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, बट उनकी रुखसत ही नहीं होती थी. इट वाज नॉट कंज्यूमेटेड. द सेम थिंग हैपेंड. द गर्ल्स वर स्टिल विद हर मदर, एंड नबुआ डिक्लेयर हो गया था, एंड दे वर स्टिल इन देयर मैका. Abu Lahab's reaction to Muhammad's Sallallahu Alaihi Wasallam's newly found mission. Abu Lahab was fiercely opposed to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from the outset. यानी beginning से जैसे शुरू हुआ ये सिलसिला तौहीद का, डिक्लेरेशन का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब से उनकी अपोजिशन शुरू हो गई. Most of Banu Hashim were rather late in accepting Islam, yet they supported and protected Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam out of tribal loyalty. Makkans का, I had told you, they are very tribal conscious, यानी उनकी loyalty बहुत ज़्यादा matter करती है. So even though they are not accepting the idea of Aqidah Tawheed, but because of the tribal loyalty, they were still supporting and protecting Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They even accompanied Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to Shib Abi Talib. जब वो वैली में उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, तो उधर भी बनु हाशिम वाले जो कबीले के लोग थे, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे. But the case of Abu Lahab was different. Abu Lahab was totally offset. वो पहले से आखिर तक इसके एंटी ही रहे मिशन के. He would not miss any opportunity to hurt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab regularly attacked him with foul language, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded with silence. Again, a very good lesson for us. Yani, in spite of him attacking him, literally physical abuse, language abuse, humiliating, taunting, he didn't leave an opportunity. Both husband and wife. But
What was Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's response? He responded with silence. According to the tribal Arab custom, a paternal uncle was just like one's own father, especially if the biological father of the person had died. यानी उनके ट्राइबल के कस्टम के हिसाब से अगर किसी का फादर एक्सपायर हो गया तो उसका चचा इज एज गुड एज द फादर. तो देखा जाए तो वो उसके फादर की पोजीशन पे थे. And if Abu Lahab had the decency to follow the custom of this time, he would have at least protected Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if not respond to his call. जैसे कि बनु हाशिम वाले लोग कर रहे थे. अगर वो respond positively ना भी करे, तो he should have honored the tribal clan. He should have honored this custom that he is supposed to be taken as father of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but he did not. उन्होंने सब चीजों को तोड़ दिया, सारे rules को साइड में कर दिया. On one occasion, Muhammad sallallahu alaihi wasallam received Allah's instruction and warn your tribe of Muhammad of near kindred. जैसी ये आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी को वार्निंग दो, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मेंबर्स ऑफ द क्लैन को इनवाइट किया, बनु हाशिम को. एटलीस्ट 45 मेंबर्स आ गए थे. अबू लहब एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड विजिटेड हिम. और फिर पूरी बड़ी जमात में उन्होंने उनको अटैक किया. बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट रिटेलिएट. अगेन कोई उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वायलेंटली कुछ रिटेलिएट नहीं किया. When he called a meeting of the members of his clan on another occasion, this meeting was also sabotaged by Abu Lahab. यानी जब कहीं भी वो जाते थे, गैदरिंग करते थे, Abu Lahab used to go there and उनके बारे में बुरा भला कहते थे, उनकी इनविटेशन के बारे में बुरा भला कहते थे. Abu Talib, however, was encouraging. He said on the occasion that he would support Muhammad sallallahu alaihi wasallam as long as he was alive. One second, girls. Okay. So whenever he used to go, Abu Lahab used to sabotage that meeting and talk very ill and start abusing him. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not retaliate at all. And on the other hand, Abu Talib was very encouraging. And he declared in one of such meetings that he would support Muhammad sallallahu alaihi wasallam till he is alive, till the end of his life. And we witnessed that. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sure of Abu Talib's support, he called the Quraysh from Mount Safa for an emergency meeting. And when the Makkans gathered, he told them about his appointment as a messenger of God and invited them to believe in the oneness of God and Day of Judgment. Abu Lahab again was present there. He was irritated and swore to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He asked why Muhammad sallallahu alaihi wasallam had troubled them with an announcement he considered unimportant. And you just imagine, एक जगह भी, एक मौके पर भी अबू लहब ने उनको रिडिक्यूल करने के लिए नहीं छोड़ा. Anyways, Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not respond to any of Abu Lahab's comments, but Allah responded. The power of Abu Lahab will perish and he will perish. The 111th chapter of the surah, Al-Lahab was revealed. आप देखें, जब जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तब कहाँ से रिस्पॉन्स आता है? सुभान अल्लाह. When you're doing things for the sake of Allah Azza wa Jal, when you're leaving things for Allah Azza wa Jal, you get response from Allah Azza wa Jal in this life and definitely in the hereafter. And we have amazing examples. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not respond, and Allah, he gave this ayah in the verses of chapter 111. The revelation of the surah further added to the frustration and fury of Abu Lahab and his wife Jamil. Carrying rocks in her hands, she went around to find Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was sitting with Abu Bakr in the vicinity of Kaaba. यानी आप देखें, अभी ये औरत की हरकतें देखें. जमील अपने हाथों में रॉक्स लेकर, स्टोन्स लेकर ढूंढ रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सिटिंग विद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, काबा की विसिनिटी में बैठे हुए थे. Jamil came to them, but God willed that she could not see Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Again, this is one of the miracles. यानी वो उधर आई, मगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकी. And
and she could see Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, but she could not see Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of the miracles. And she asked Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu where he was. I have learned that he speaks ill of me, she said. By God, if I find him, I shall hurl these rocks in his face. She said she was a poetess and went on to recite a new piece of poetry. I had told you कि उस टाइम के जो मक्कन्स थे उनकी एक जो खासियत थी कि they were very good in poetries. They used to love reciting and writing poetries. So she's saying कि in fact they are talking ill about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but look at how evil people can be. So she's having rocks in her hand and she's asking and inquiring Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu कि Muhammad sallallahu alaihi wasallam किधर है. I heard that he is talking ill about me and I'm going to throw this stone and hurt him. And then she's saying a poetry. We have disobeyed the blameworthy, we reject his affair and we leave his religion with disdain. यानी कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहां पर उन्होंने इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी. Even in their thinking, in their words, in their poetry, in their literature, they are trying to harm. But you can imagine when Muhammad sallallahu alaihi wasallam is enduring everything patiently, we know very well who is responding. And that response is going to be the final and the deadly response. This is the kind of enmity Abu Lahab and Jamil had towards Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी इतनी ज़्यादा poison, इतना ज़्यादा animosity थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी. Abdus Salam Kailani has responded to Jamil's piece in the following words. Of course, जहाँ पर इस तरीके के poisonous लोग होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग honey भी होते हैं. तो जैसी ये जहर Jamil ने in form of the poet उगला, then another person, Abdus Salam Kailani, he responded to her piece of poetry. We have obeyed the praiseworthy, we accept his mission, we embrace his religion, and we shall sacrifice our lives to protect him. How beautiful. He said कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, but we have obeyed the praiseworthy, we accept his mission. वो अपनी acceptance को बयान कर रहे हैं और embrace कर रहे हैं religion को और ये भी guarantee दे रहे हैं कि we will sacrifice our lives to protect him. Subhanallah. Abu Lahab's sons divorced Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughter. Abu Lahab called each of his two sons separately and said, I shall not see your face again unless you divorce Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughters. अब आप देखें अबू लहब जब एक तरीके से उनको हर्ट नहीं कर पाया, वी हैड डिस्कस दिस कि वो चाहते थे फिर कि वो उनको पर्सनल फैमिली पीस को जो है उसको खराब करें. एंड विद ऑल दिस पॉइजन एंड विद ऑल दिस एनिमोसिटी, अगेन इट इज डिफिकल्ट टू मैरी और स्टे इन दिस वेडलॉक काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और इमोशनल किया कि मैं तुम्हारा फेस दोबारा नहीं देखूंगा जब तक कि तुम डिवोर्स नहीं करते हैं. Elsewhere, it is reported that Abu Lahab said to his sons that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has spoken ill of him and his wife and had tried to disgrace them. यानी अभी वो झूठ फरेब की बातें करते हैं. जब बंदा evil हो जाता है, जब शैतान की गिरफ्त में रहता है, तो उससे सही गलत की पहचान नहीं होती, हराम हलाल की पहचान नहीं होती. तो एक नरेशंस में है कि उन्होंने अपने बेटों को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनकी मॉम को, जमील को बुरा भला कहा है और उनको डिस्ग्रेस पहुंचाई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि डिवोर्स हो. Then Utbah said he would go to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and say something very offensive about his God. So he went to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swore at him and divorced his daughter. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam was so disturbed by what Utbah did that he prayed to God. यानी अब आप देखें जब evil follows after evil, उनके बाबा ने उनको भड़का दिया. What did he do? Utbah said, I will go and I will also say offensive things about his God, which is astaghfirullah lazim. यानी एक तो रिलेशनशिप की है, अब देखें कोई मान नहीं, इन अ वे ऑल्सो ही इज द फादर इन लॉ. दूसरा मैसेंजर ऑफ गॉड. तीसरा उनका अपना खुद का एक यानी उनका एक अपना रिलेशन है. एंड स्टिल दिस गाइज दे डिड नॉट केयर अ बिट बिकॉज देयर इविल फादर, जिस तरीके से उन्होंने उनको भड़का दिया, उन्होंने किसी भी चीज का मान नहीं रखा. एंड ही वेंट एंड यूज्ड सम ऑफेंसिव लैंग्वेज and swore at him and divorced his daughter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam got really disturbed. यानी आप देख लें एक बार, ये भी इंसानी कैफियत है. इंसान अपने ऊपर कोई तकलीफें झेल लेता है, लेकिन जब औलाद पर बनती है
तो बड़ी तकलीफ होती है. एंड सेकेंडली he used the abusive language about his gods. Of course, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very hurt. And then finally he prayed. Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah. Again a lesson for us. जब हम ऐसी कोई चीज़ अनाउज़ुबिल्लाह हमारे सामने आए, rather than retaliating, हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? If you want to follow your Nabi, cry, ask Allah Azza wa Jal, pray to Raka, make dua, go in sujood, ask Allah to help you, to comfort you, and take revenge on your behalf, that you don't retaliate. So he prayed to Allah. Oh Allah, appoint one of your hounds on him. Yani, he literally cursed him. Imagine the Nabi cursing someone. And you will not believe कि नबी की बात या इस तरीके की जो दुआ होती है डेफिनेटली खाली नहीं जाती. इनफैक्ट अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा हो तो मजलूम की भी दुआ खाली नहीं जाती. आपको पता होगा देयर इज अ हदीस इन दैट वन ऑफ द कैटेगरीज मजलूम की दुआ खाली नहीं जाती. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अपॉइंट वन ऑफ योर हाउंड्स ऑन हिम. You know what is a hound? It's a wild kind of a pack of wolf or a dog. But what happened when Utbah traveled sometime later? He was going to Sham. कारवान लेके वो शाम पे जा रहे थे. तो उनका कारवां रास्ते में रात में रुका एक जगह पे जिसका नाम था जरका. और एक लायन आया. A lion circled them. Utbah freaked out when he saw the lion, and he said the lion was going to devour him because Muhammad sallallahu alaihi wasallam had cursed him. यानी आप देखें ये भले अकीदा तौहीद पर यकीन नहीं रखते थे, मगर कहीं ना कहीं जाके उनको ये पता था कि द पावर ऑफ अ मैसेंजर और अ प्रोफेट क्या है. बिकॉज जब उसने ये लायन को देखा उतबा ने जरका में, तो उसके वर्ड्स ये थे कि ये लायन मुझे खाने वाला है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कर्ज किया है. यानी उसका यकीन देखें. He said Muhammad sallallahu alaihi wasallam could kill him even though he was in Asham and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in Makkah. यानी उसकी जब वो उसने अपनी मौत को देख लिया, उसने देख लिया कि ये लायन उसको ही टारगेट कर रहा है और उसको खाने वाला है, तो उसके ये अल्फाज निकल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठे बैठे मुझे अशाम में he has the power to kill me. To calm him down, people got him to sleep in the middle of the group. यानी उसको घबराहट होने लगी तो लोगों ने उसको काम डाउन किया और उसको लोगों के बीच में सराउंडेड वाली जगह दी. फिर भी रात को लायन ने उसको स्पॉट किया और किल कर दिया. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सीरा विच आई हैड रेफर टू, उसमें ये किस्सा मेंशन है कि उसके सर को उसने पूरा खा के क्रश किया. यानी वी हैड अ वेरी बैड डेथ. Zarqa is located near Amman, the capital of present-day Jordan. It was a center of trade in 6th and 7th century. We discussed about this. Biographers have differed over whether it was Utbah or Utaiba who was devoured by the lion. In his Al-Rahiq al-Maktum, Mubarak says it was Utaiba who misbehaved and was cursed. So again there is a mixed opinion कि शायद उत्बा है कि उत्तैबा है, लेकिन इन Al-Rahiq al-Maktum जो मैंने आपको बताया अभी मुबारकपुरी की बुक, उनके अंदर उत्तैबा का लिखा हुआ है. अल्लाहु आलम. But anyways, this was what they did and this is their end. What happened? God's wisdom outdid the Makkans' plot. Biographers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam have noted that the Makkans thought of disrupting his peace at home when nothing else seemed to work. As a desperate measure, they thought of getting his daughters divorced. They approached Abu Alas. अभी इन दोनों का डिवोर्स हो गया, अब वो अबू अलास के पास जा रहे हैं कि ज़ैनब को डिवोर्स करो. And then Zainab radiallahu anha को डिवोर्स करके he can marry any of the Makkan women of his choice. But we know very well Abu Alas was a man of wisdom. He immediately rejected that idea. When the same offer was made to the sons of Abu Lahab, they readily agreed और रुकैया और कुलसुम को वो लोगों ने डिवोर्स कर दिया. यानी अपने डैड की तरफ से भी उनको फोर्स था और ये मक्कन की तरफ से भी उनको ऑफर आई. So Abu Lahab, Jamil and other Makkans hoped and wished that the divorce of Ruqayya and Kulthum would cause trouble in Muhammad sallallahu alaihi wasallam's home. But Allah की जो हिकमत है, Allah के दूसरे plans हैं. The Makkans' hopes and wishes were dashed because God blessed Ruqayya with Uthman ibn Affan, who was better than Abu Lahab's son. Anyway, anytime. Uthman ibn Affan was comparatively far more better. Far more better. Alhamdulillah, again, Allah Ta'ala ने यहाँ पर बेहतरीन किस्म का अंजाम दिया. So as a husband, as a human being, Uthman ibn Affan was way above.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was also happy about this marriage and regularly blessed the couple with prayers and good wishes. Ruqayya's marriage to Uthman ibn Affan. Uthman radiallahu anhu was a handsome yet modest human being. We know very well how modest he is because हमने काफी सारे इनके बारे में हदीस में किस्से सुने हैं. He was one of the Banu Umayyah and was persuaded by Abu Bakr to embrace Islam. Uthman was a wealthy trader and the most eligible bachelors in Makkah. He proposed to marry Ruqayya after she was divorced by Abu Lahab's son. The proposal was accepted and he married her. According to the report of At-Tabrani, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was instructed by God to marry his daughter to Uthman. यानी he was respected in the Makkan society and he was the most eligible. यानी हर कोई उनके ऊपर नजरें डाल के बैठा हुआ था because he was a wealthy trader. And इसलिए उनका proposal जो है जैसे ही आया after the divorce with Abu Lahab's son, रुqayya के लिए Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam accepted it. In another place it is given that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam को अल्लाह की तरफ से आपकी साउंड बहुत ब्रेक हो रही है. अच्छा सबके साथ हो दूर रहा से है भी या आ रही है. अभी आ रही है ठीक? It's better now. Okay, alhamdulillah. Okay, एक तरफ ऐसी अत-तबरानी की रिपोर्ट है कि ये इंस्ट्रक्शन अल्लाह की तरफ से आया था that he should marry his daughter to Uthman radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas reported that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, God has intimated me by the way of wahi that I should marry my beloved Ruqayya to Uthman ibn Affan. So Makkans ये शादी में नहीं आए. They did not attend the marriage ceremony. Instead, they began to plot against Uthman, but their schemes were all unsuccessful. We know all that very well. तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी हो गई. अल्लाह के इंस्ट्रक्शंस आए थ्रू वही एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये सेरेमनी हुई. Makkans did not attend the ceremony, but they started planning against Uthman because अभी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ते जाएंगे, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन, तो वो उस लिहाज से उनके लिए भी प्लानिंग करना शुरू कर देते थे. Now, how were Uthman and Ruqayya as a couple? They were very beautiful, very much in love with each other. Their private and public life was commendable. The couple soon became well known in Makkah. People began to describe the two as the best couple mankind had ever known. Subhanallah, very good title. They had an amazing chemistry, not least because Khadija radiallahu anha had raised her daughter as very good human beings. Now we take lessons from here as a mother. Just close your eyes. भले आपके बेटा हो बेटी हो, भले वो कोई भी एज के हो, सोचें, कंटेम्पलेट करें, आज से शुरू करें तैयारी. क्या आपने एक ऐसी औलाद तैयार की है जो एक बेहतरीन हस्बैंड या वाइफ बनेंगे? सोचें, इसके बारे में बहुत ज्यादा गौर फिक्र करना है क्योंकि हमने सिर्फ अपने बच्चों को लाड प्यार में बिठा कर मुंह में निवाले दे दिए, उनको स्कूल की पढ़ाई करा दी, उन्हें अच्छे कपड़े अच्छे गैजेट्स दे दिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई. ये नहीं, आप उस एंगल से उसकी तरबियत करेंगे कि कल को ये अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे, ये उसको सर्व करेंगे, ये उनके अप्स एंड डाउन्स में उनका साथ देंगे, उनको दीन पे रहने की तलकीन करेंगे, ताकीद करेंगे, ये अच्छे आगे चल के पेरेंट्स बनेंगे. ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ तरबिया है. इट्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग. तो मैं चाहूंगी कि एज एन होमवर्क आप अपने जहन में ये रखें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू. इनफैक्ट इफ यू वांट वी कैन डू इट एज एन एक्टिविटी. हम अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डू टू मेक माय चाइल्ड अ बेटर स्पाउस फॉर टुमारो. क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं कि कल को ये एक बहुत हेल्पफुल, बहुत कंसिडरेट, बहुत काइंड स्पाउस बने. राइट? ओके. Migration to Ibn Sina. With the passage of time, life in Makkah became increasingly difficult for Muslims. So, migration का हुक्म आने लगा. The Makkans who had rejected Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's message continued to oppose and persecute those who accepted his mission. यानी जब उनकी सारी चालें, सारा मकर नहीं चलने लगा, सारे प्लॉट्स फेल होने लगे, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया? Persecution शुरू कर दिया. They started killing people who were reverting to Islam. So at one point, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam had to urge some of the most vulnerable members of the nascent Muslim community to migrate to Ibn Sina, which is Ethiopia of the present day. The Negus who ruled Ibn Sina at the time was known to be a just king. So, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ने जो ज़्यादा रिस्क में थे उन लोगों को माइग्रेट करने का हुक्म दिया.
Like Asham, Ibn Sina was also a trade destination for the Makkans. They enjoyed the food and moderate climate in Ibn Sina, in addition to the lucrative trade. After receiving instruction from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a small caravan headed to Ibn Sina in Rajab, which is 5th year of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's Nubuwa. The first family after Ibrahim and Lut to migrate in the path of God. Yani Ibrahim alayhi salam and Lut alayhi salam उन्होंने migrate किया था. तो after them जो first family migrate कर गई थी वो कौन सी थी? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam reportedly praised his daughter and son-in-law as the first household to migrate for the sake of Allah. After their ancestors Ibrahim and his nephew Lut alayhi salam. The small group was led by Uthman ibn Affan. It consisted of 12 men and 4 or 5 women, one of whom was Ruqayya, the daughter of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salama, who later married Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, was also one of the migrants. यानी सिर्फ 12 आदमियों का और 4-5 औरतों का ये काफिला लेकर उस्मान इब्न अफान चले इब्न सीनिया. इसमें रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा उनकी वाइफ भी थी, and Salma, who later on married Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, was also in the migrants group. At the time of migration to Ibn Sina, she was accompanied by her husband Abu Salma. तभी वो हयात थे, Abu Salma उनके husband. The caravan left Makkah in the darkness of the night to evade the attention of the Makkans. Ruqayya wept as she bid farewell to her parents, thinking they might never meet again. आपको पता है हिजरा का इसलिए इतना अजर है कि you are doing it from the land of disbelief to the land of belief, और आप अपने दीन को बचाने के लिए हिजरा कर रहे होते हैं. तो आप अपनी होमलैंड छोड़ रहे हो, आप अपने लोग छोड़ रहे हो, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो. तो ऑफ कोर्स यू हैव दैट इन योर फितरा, और जब वो सब छूटता है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, देन ऑफ कोर्स जिनका यकीन और अकीदा स्ट्रांग होता है उनको वर्ल्डली चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होती, बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ योर फितरा यू फील इट. सिमिलरली रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा आल्सो वेप्ट बिकॉज शी वाज थिंकिंग मे बी दे विल नॉट मीट अगेन, बिकॉज ऐसे हालात थे कि मक्कन खून के प्यासे हो रहे थे मुस्लिम्स के. So you never know. She was not sure, unsure. Maybe she'll meet her father and her family again or not. The Makkans chased the caravan. हालांकि ये लोग रात को निकले, खामोशी से निकले, but still Makkans को इसकी खबर लग गई. Fortunately, the group found 2 boats that were about to depart when they arrived at the port of Shuaibah. They were charged reasonable fares on their onward journey to the Ibn Sinian port. After the group departed, a woman came to Makkah and told the Makkans that she had seen Uthman ibn Affan and Ruqayya heading to the port of Shuaibah. The Makkans were upset when they learned about the attempted migration. They sent men to chase Uthman and Ruqayya. But the two, along with the others, had left the port of Shuaibah long before the Makkans got there. Alhamdulillah. ये लोग पोर्ट में पहुंचे, वहां पर एक औरत ने इनको स्पॉट किया, उसने जाकर मक्कन्स को इन्फॉर्म कर दिया. मक्कन्स बहुत अपसेट हुए कि ये माइग्रेशन शुरू हो गया, तो उन्होंने चेज करने के लिए लोगों को भेजे. But alhamdulillah, by then they had already left and they were saved by Allah. Return for Ibn Sina and continuing problems. In Ibn Sina, the migrant Muslim community felt relieved. Sorry. They enjoyed religious freedom. Ruqayya was happy with her husband but thought about her parents all the time. The migrants were keen to receive news from Makkah. Only 3 months after their arrival in Ibn Sina, a rumor spread that the Makkans had converted to Islam. The migrants were very happy to hear the news and headed back to Makkah only to discover that they were misinformed. अब ये पहुंच गए इब्न सीनिया में, वहां पर बहुत रिलीफ और आराम से सुकून से रहने लगे. लेकिन रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा was worried about her parents all the time. And migrants हमेशा इस चक्कर में रहते थे कि कोई न्यूज़ आए मक्का की, क्या चल रहा है वहां पर. वहां पर एक रूमर फैला कि मक्का हैज रिवर्टेड टू इस्लाम, यानी पूरी मक्कन सिटी जो है वो मुस्लिम हो गई है. ये सुनते ही वो बहुत खुश हुए. फिर उन्होंने कहा कि हम लोग रिटर्न होते मक्का में, बट दैट वाज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन. Okay. Hello. Then the sad news of Khadija radiallahu anha's death. When they planned to return back, what happened? Ruqayya found out that her loving mother had died. Ruqayya could only bear the loss with patience. The Makkans' treatment of the Muslims had worsened. Among other things, Abu Talib's death had emboldened
the Makkans who no longer hesitated in attacking and persecuting members of the Muslim community. यानी ये जो टाइम ऑफ ग्रीफ जो था ना, गम का साल, जब अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की डेथ हुई, तो उस दौरान आपको पता है कि वो जो शिव वैली का भी जो बॉयकॉट चल रहा था, यानी दिस टाइम वाज टोटल डिप्रेसिंग एंड फुल ऑफ ग्रीफ. Muslims then prepared to migrate to Ibn Sina a second time. यानी अभी ये वापस आ गया था जो फर्स्ट ग्रुप, अभी ये सारा यहाँ पर परसिक्यूशन ज़्यादा चल रहा था एंड लॉट ऑफ इश्यूज वर हैपनिंग हियर. तो दोबारा से सेकंड ग्रुप का इमिग्रेशन टू इब्न सीना की तैयारी चलने लगी. Now historians have noted that Ruqayya and Uthman were among those who migrated the second time. तो ये दोबारा भी इन्होंने माइग्रेशन किया. Now after few years they came back, returned to Makkah. With the increasing hostility of the Makkans, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was finally permitted by Allah to migrate to Medina. यानी ये इब्न सीना का 2 बार माइग्रेशन ग्रुप में उन्होंने कर लिया था, एंड देन वापस जब मक्का में आए तब तक फिर अल्लाह ताला ने मदीने में हिजरत करने की इजाजत दी. तो members of the Meccan Muslim community began to migrate individually or in small groups. फिर वो धीरे धीरे मदीने में रवाना होने लगे. रुकैया and उस्मान left their home for the third time to migrate to Medina. तो 2 टाइम वो इब्न सीना गए and third time they left for Medina. Upon arriving in Medina, the couple were hosted by Aus ibn Thabit, brother of Islamic poet Hassan ibn Thabit. Sometime later, Muhammad sallallahu alaihi wasallam also arrived in Medina along with Abu Bakr radiallahu anhu. The Muslims were finally relieved of the persecution meted out by the Makkans. In Medina, they were free to practice their religion and worship Allah as they wished, which is one of the greatest ni'mah. Imagine, these people are struggling so much. अभी भी आज की तारीख में भी आप दुनिया में देखें, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर to practice your religion, it's a task, it's a havoc. जहाँ पर कुरान पढ़ना अलाउड नहीं, जहाँ पर सलाह पढ़ना अलाउड नहीं, जहाँ पर हिजाब लेना अलाउड नहीं, जहाँ पर अजान अलाउड नहीं, जहाँ पर मस्जिदों की कोई तामीर नहीं, जहाँ पर कोई मदरसा नहीं, जहाँ पर कोई सही दीन नहीं. मैं आपसे कहूँगी एक्स्ट्रा शुक्र आज आप अदा करेंगे अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमको ये राहत दी है, ये फ्रीडम दी है कि हम अपना दीन, अपनी इबादत आराम से कर सकते हैं. अब ये हमारी कोताही है कि हम इतने आसानी से प्लेट में सर्व किया हुआ दीन भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे. इमेजिन अ स्टेट लाइक दिस जहाँ पर आपको अलाउड नहीं है कलमा शहादा पढ़ना, आपको अलाउड नहीं है अपना दीन फ्रीली प्रैक्टिस करना. So this is one of the greatest blessings. I would want you all to say additional millions shukr to Allah for this blessing. Forced migrations, particularly of whole communities, are full of challenges. Yet the teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam were so dear to his early followers that they sacrificed their homes, their property, their businesses when they migrated to Medina. यानी आप सोचिए, it's not easy. It is definitely not easy. अपना घर बार पूरा सेटअप, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी कंफर्ट जोन, अपने रूट्स को छोड़कर only for the sake of Allah Azza wa Jal to follow your deen, you're just traveling like that and then setting up yourself again, पूरा अपने आप को uproot करके दोबारा से replant करना. Subhanallah. This was with the sole intention of practicing and preaching their religion and earning the pleasure of Allah Azza wa Jal and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. यानी ये इतनी सारी पेन्स किस चीज के लिए? Just to seek the pleasure, अल्लाह को राजी करने के लिए. The birth of a son in Ruqayya's household. After bearing so many difficulties in the path of Allah Azza wa Jal, Ruqayya and Uthman were blessed with a son whom they named Abdullah. Ruqayya was therefore called Abdullah. According to the Arab custom, Ruqayya and Uthman did not have any offsprings after Abdullah. तो इन दोनों की एक ही औलाद थी, वो थी अब्दुल्ला. Ruqayya's illness and the Battle of Badr. Shortly before the Battle of Badr, Ruqayya radiallahu anha contracted smallpox. उनको smallpox का infection हो गया था. She was offered all kinds of treatment that was available at the time, but her condition continued to worsen. The decision to face the Makkans at Badr was announced. The Muslim community, including Uthman radiallahu anhu, began to prepare for the battle. Meanwhile, Ruqayya's condition deteriorated. रुकैया रदियल्लाहु अन्हा को स्मॉल पॉक्स हो गया था और उस टाइम पे जंग बदर का ऐलान हो गया था. तो सारे जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी जो इंक्लूडिंग उस्मान रदियल्लाहु अन्हु वो
प्रिपेयर करने लगे बैटल के लिए, लेकिन रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की कंडीशन जो थी वो ख़राब हो रही थी। Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised Uthman radiallahu anhu to stay in Medina to look after Ruqayya. Uthman faced a dilemma to look after his wife or to participate in the battle. अब इनकी कश्मकश शुरू हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप अपनी बेगम का ख्याल रखें और जंग पे ना जाएं, बट वो एक सोच में पड़ गए कि मुझे जंग पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उन्होंने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक्सप्रेस किया कंसर्न कि मुझे अल्लाह का जो बेहतरीन अजर है जो मैं जंग पे जाने से हासिल करूंगा वो रह जाएगा। आपकी साउंड वापस दूर हो रही है, अच्छा, कम हो रही है। ओके, अभी सही है। ओके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप यू हैव अ चॉइस, यू कैन स्टे बैक एट होम एंड अपनी बेगम का ख्याल रखें, बीमार वाइफ का अपना ख्याल रखें और जंग पे ना जाएं। एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु सेड कि मुझे जो अजर मिलने वाला है कि मैं जंग में जा रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, जिहाद क़िताल में हिस्सा लूंगा, तो वो अजर मुझे नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीअश्योर्ड हिम दैट he would be rewarded like the other participants and would even receive a share of the booty. यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला, उनको अश्योरेंस दिया कि आपको इंशाल्लाह ताला सेम काइंड ऑफ अजर मिलेगा, और वो जो इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं, जो बूटी मिलती है, अगर जो साइड जंग की जीत जाती है तो उन लोगों को माले गनीमत मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आपको इंशाल्लाह उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। अगेन वन ऑफ द वाइज डिसीजंस एंड अ गुड लीडर साइन, जो हमेशा हम जब भी सीरा पढ़ेंगे या जब भी हदीसें पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फेयर थे, कितने जस्ट थे उनकी डीलिंग में, और कितनी काइंडनेस उनकी हर एक फैसले में, हर एक डिसीजन में, हर एक ओपिनियन में एक मैच्योरिटी, एक विजडम और एक लीडर की क्वालिटी नजर आती है। इट इज़ नेवर इनह्यूमन, हमेशा उसमें एक ह्यूमैनिटी होती है। यानी आप सोचें, जिहाद फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड टेकिंग केयर ऑफ द वाइफ, अब ये दो चीज़ हैं। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन हो तो वो ये कहे कि नहीं, आप जंग पे चलो, आपकी बीवी तो ठीक है, यहाँ पर है लोग ख्याल रखने के लिए, दे कैन टेक केयर, आप जंग पे चलें। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, एंड ही एडवाइज्ड हिम कि यू बीइंग विद योर वाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज द साइन, दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें गेज करना है व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, हमारे ऑब्लिगेशंस, and then we have to decide, because Allah hukukul ilahi, he can still forgive, but hukukul ibad is something that will get us into trouble. Billah. I hope and pray कि अल्लाह ताला हमको आज इस तरीके की हिकमत दे, इस तरीके की पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे कि हम लोग we are able to do justice। जितने हमारे रिलेशंस है, जितने लोग हमारे अंडर हैं, हम जिनके मसूल हैं, अल्लाह ताला हमें उनके सामने बिल्कुल जस्टिस करने वाला और फेयर डीलिंग करने वाला बनाए या रब। It's about time. Inshallah, we'll continue tomorrow to see what happened to her illness and the death of Ruqayya radiallahu anha and the death of Abdullah. Inshallah, we will continue. कोई सवाल है या कुछ है तो it's an open forum. Anybody would like to add anything? Nothing? No raised hands? No, we just want to say Jazakallah to you because we can see bol ke tera bhi gala sukh raha hai, you're fasting and you are saying all of this for us, so No. Jazakallah khair. وياكي قبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم Jazakallah khairan. ورحمة الله Thank you وبركاته. so much.